So we are doing the past paper theory questions. ठीक है, इसका experimental techniques के ज़्यादातर ATP questions और MCQs हैं, but these are some of the theory questions which are mentioned here. Okay, so the first question which I have in front of me on the screen, it says that proteins. It says that the proteins are polyamide, right? The protein is basically a polyamide. That means it's a macromolecule which is made up of multiple amino acids. So protein is a macromolecule, is a giant molecule. ठीक है, ये giant molecule है जो कि which is made up of small units of amino acid. There are approximately 20 amino acid known. तो किसी भी amino acid के combination से protein बन रहा है. Now what is the demand of the question is that they're asking you the hydrolysis of protein. The hydrolysis of protein form a mixture of colorless amino acids described with the aid of label diagram. So examiner expect us to draw the setup diagram of the setup, how paper chromatography can be used to identify the mixture of amino acids, right? Now this is a process which you will be doing in organic chemistry. ठीक है, organic chemistry में आप ये process पढ़ेंगे जिसका मतलब है which actually explains hydrolysis क्या होता है जब आपके giant macromolecules होते हैं, when you have a giant large molecules, उनको जब हम break down करते हैं, ठीक है, that process is known as hydrolysis, ठीक है, into smaller units which in this scenario are basically your amino acids. So when a protein, when it breaks down, when the giant protein molecule break down, so it will be giving you combination, it will be giving you the mixture of amino acids. Now they want us to draw, to perform the chromatography, the paper chromatography, to identify the mixture of amino acids which is present. As I have already told you that the chromatography is not a separation technique. मैंने आपको पहले बताया था, because you are performing this chromatography with the small samples. So this is not a separation technique, but this is basically, the chromatography is a technique which is actually known as the identification technique. This is an identification technique. This is not a separation technique. ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें जो भी अमाइनो एसिड्स इस प्रोटीन के अंदर है. ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी तो आप ऑलरेडी ही परफॉर्म, हाइड्रोलिसिस तो आप परफॉर्म कर ही चुके हैं. ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें, तो अब हम कर सकते हैं. He is asking us with the help of a label diagram. अगर आप एक label diagram बना रहे हैं तो it's one diagram is better than 100 words. ठीक है, तो वो आप उसको label कर दीजिए और 2-3 sentences से आप उसको further explain कर सकते हैं. It's a complete 4-mark question. So let's see how to go about it, right? So these 3 things we have the solvent front, which is just below the starting line drawn in pencil, and solvent front also have label जहां पर मैं solvent को top तक लेके जाऊंगी. Solvent front is a level जहां तक आप इस solvent को absorb होने देंगे. ठीक है, अगर इसको above करेंगे, next you will be placing, either you will be placing a pure sample spot using a capillary tube, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और साथ में जो भी expected आपके दूसरे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आप समझते हैं इसके अंदर अमाइनो एसिड्स और हो सकते हैं इस मिक्सचर में, उनके प्योर सैंपल्स आपने यहाँ पर लगा दिए. अब आप उनको कह रहे हैं कि फाइन, दिस इज अमाइनो एसिड 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. ठीक है, अब क्या होगा, ये मिक्सचर जो है, अब ये क्योंकि प्योर अमाइनो एसिड्स है तो ये खास डिस्टेंस तक माइक्रोमैटोग्राफी का किस क्राइटेरिया पे सेपरेट करती है, इट सेपरेट्स ऑन द क्राइटेरिया ऑफ रिलेटिव सॉल्युबिलिटी इन द गिवन सॉल्वेंट. तो ए शायद अगर यहाँ 1 अगर यहाँ पर स्पॉट दे रहा है, ठीक है, और 2 जो है वो शायद यहाँ तक, लेट्स अज्यूम, ठीक है, 3 जो है वो समवेयर लेस सॉल्युबल है, वो यहाँ तक दे रहा है, और 4 हमें यहाँ दे रहा है. और आपका जो सैंपल है उसके अंदर आपको 2 स्पॉट्स मिल रहे हैं या 3 स्पॉट्स मिल रहे हैं. लेट्स सपोज एक स्पॉट आपका यहाँ आ रहा है और एक स्पॉट यहाँ आ रहा है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टेक्निक से आप क्या करेंगे, आप इनका अलाइनमेंट चेक करेंगे.
ये वाला स्पॉट इसके साथ अलाइन कर रहा है और ये वाला स्पॉट इसके साथ अलाइन कर रहा है, तो इसका मतलब मेरे पास इस मिक्सचर के अंदर, इस सैंपल के अंदर, ठीक है, इस सैंपल मिक्सचर के अंदर आई हैव बेसिकली टू स्पॉट्स, आई हैव टू, so I have amino acid 1 and I have amino acid 3, ठीक है। तो this is going to help us, this is going to tell us कि इस particular sample के अंदर जो आपका प्रोटीन का जो sample था, which is actually a mixture of amino acid, this particular contains the 2 amino acids only। समझ में आई बात? this contains 2 amino acids only। या तो आप इस तरीके से करेंगे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दे कैन बी अदर वे ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑल्सो, ठीक है। दूसरा वे ऑफ आइडेंटिफाइंग क्या है? आरएफ वैल्यू के थ्रू, ठीक है। इस आरएफ वैल्यू में हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल बी डूइंग इन द आरएफ वैल्यू, गिव मी 2 minutes जस्ट टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक से। जैसे हमने पहले क्रोमैटोग्राम बनाया था उसी तरह से हम क्रोमैटोग्राम बना रहे हैं। वी आर हैविंग अ स्टार्टिंग लाइन और हम सॉल्वेंट के लेवल को वी आर कीपिंग इट बिलो the starting line, right? And then what are we going to do is we are going to have a spot of the mixture sample, और उसके बाद we have perform a chromatography। जब हम perform करेंगे chromatography तो we will be getting approximately 3 spots या 2 spots जो भी हैं, ठीक है। एक spot ये आया, फिर right, this is another spot, this is another spot, and then we are getting the third spot, ठीक है। अब इन तीनों स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव टू गो फॉर आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? the distance traveled, it's a distance traveled by the solute or by the spot divided by the distance traveled by the distance traveled by the solvent, ठीक है। तो ये रेशियो होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये 1 है, ये 2 है, ये 3, और हमारे पास ये डिफरेंट लेवल्स पे आ रहे हैं, तो ये डिफरेंट लेवल्स हमें बता रहा है कि सबसे लीस्ट सॉलेबिलिटी 1 की है, दिस इज लीस्ट सॉलेबल, और जितना डिस्टेंस ऊपर ट्रैवल करता है ये मैक्सिमम, ये मोस्ट सॉलेबल है, बिकॉज इट्स ट्रैवलिंग मोस्ट डिस्टेंस। अब आप 1, 2 एंड 3 की क्या करेंगे? आरएफ वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब ये सॉल्वेंट, लेट्स सपोज ये सॉल्वेंट वाटर है और ये अमाइनो एसिड्स हैं, तो एक यूनिवर्सल डेटा बुकलेट होती है जहां पर इन सब अमाइनो एसिड्स की 20 नोन अमाइनो एसिड्स की वाटर के अंदर आरएफ वैल्यू मेंशन्ड होती है, वैल्यूज मेंशन्ड होती है। तो अब आप आरएफ वैल्यू फॉर 1 निकालेंगे, तो आरएफ वैल्यू ऑफ 1 कैसे निकालेंगे? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्पॉट। तो इसके लिए आप क्या मेजर करेंगे? यू विल यूज अ रूलर, और उस रूलर को आप स्टार्टिंग लाइन से मेजर रखेंगे और स्टार्टिंग लाइन से सेंटर ऑफ द स्पॉट तक लेंगे, ठीक है। ये जो भी मेजरमेंट्स आ रहे हैं, आप चाहे मिलीमीटर में लें या सेंटीमीटर में लें, डिवाइडेड बाय द सॉल्वेंट। लेट्स सपोज दिस इज 3 and the distance traveled by the solvent from here till here, the solvent front is basically your 7, let's assume। So 3 divided by 7 will be your RF value for the component which is 1। और उस डेटा बुकलेट में जो यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है और अमाइनो एसिड्स की वैल्यू लिखी है, जिसकी भी ये वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, इसको डेसिमल्स में आप ले सकते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इट विल बी लेस देन 1। जिसकी भी आरएफ वैल्यू मैच करेगी इन आवर डेटा बुकलेट, वी विल बी आइडेंटिफाइंग कि ये अमाइनो एसिड्स है। इसी तरह से हम दूसरे का करते हैं, ठीक है। सेकेंड अमाइनो एसिड, सेकेंड अमाइनो एसिड का डिस्टेंस लेट्स से 5 है, तो वी विल बी हैविंग 5 डिवाइडेड बाय, अब दूसरा आरएफ वैल्यू ऑफ 2 कर कैसे निकालेंगे? 2 को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 5, यू विल बी डिवाइडिंग 5 बाय 7, ठीक है, यू विल बी डिवाइडिंग 5 बाय 7। जिसकी भी आरएफ वैल्यू, जिस सब्सटेंस की भी उस डेटा के अंदर ये आरएफ वैल्यू आ रही है डेसिमल्स में, वो अमाइनो एसिड आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज 2। इसी तरह से थर्ड, तो या तो आप प्योर सैंपल के स्पॉट्स लगा के जितना डिस्टेंस वो सॉल्वेंट में ट्रैवल कर रहा है उनको अलाइन करके, जो एक ही लेवल पर आ रहे हैं उनको अलाइन करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर आप थ्रू आरएफ वैल्यू। सो दीज आर 2 डिफरेंट प्रोसेस। तो इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद जस्ट 2-3 स्टेटमेंट्स, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग इट थ्रू आरएफ वैल्यू, तो आप कहिएगा वी विल बी प्रिपेयरिंग द क्रोमैटोग्राम, वे विल बी हैविंग स्टार्टिंग लाइन ऑन व्हिच विल बी पुटिंग द सैंपल, solvent will be below the starting line, will perform the chromatography, right? And we will be calculating the RF value. So the actual RF value of the substance will help us to identify the amino acids. समझ में आ गई बात? This is how we will be doing it. Either these are 2 different ways of doing.
This is way one, where you have a spots of the pure sample and make a comparison. This is the way two, where on the basis of RF value you can identify the substance. Okay, and just 2 or 3 lines along with this diagram, this is a label diagram, will be enough to for you to score 4 marks. So in this, they are asking, this is a question. It says that lavandulol is a lavender plant. This is the name of a lavender. Lavender is a smell, which is normally we have seen in the talcum powder, lavender, talcum powder and all that has a very pleasant smell. So this is a chemical which is present in the lavender plant. So this formula which is given to us is the formula for lavandol, right? Now, lavender flowers contain a variety of colored compound. These can be extracted from the flower to give a solution of the colored compound. Describe how to use a paper chromatography to identify. They are not asking separation. We are every time we are taking chromatography as an identification technique of these colored compounds. You may use a label diagram in your answer. So again, the way we have done in the previous question, we will be doing the same way. We will be telling them that we will be making a chromatogram, starting line. This is going to be a solvent front. On the starting line, we'll be putting a spot of the sample. And when you will be having a solvent front below the sample, what will happen? The components, this mixture, right? This mixture of colored components will split up into its components. Okay, this mixture. And when we will be having, when this will split up into its component, we can identify either using the RF value or by having a sample, the original sample placed next to it and aligning the distance traveled by the pure substance and the components of the mixture. Any one of these ways you can do it. सही है तो either you can do it on the basis of RF value or you can have a pure you can have a pure sample and you can align the spots with the pure sample. तो ये एक मेथड A है और ये B है. अकॉर्डिंगली आप जो है अपने आंसर को जैसे भी आप प्लान करें तो उस तरह का आप डायग्राम बना लीजिएगा. ठीक है, और उसी हिसाब से आप डिटेल्स दे दीजिएगा. तो सबसे पहले याद रखिए कि आपको जो डिटेल देनी है आपको क्या देना है. वी हैव टू राइट इट डाउन दैट chromatography is an identification technique. ठीक है, इट्स एन आइडेंटिफिकेशन टेक्निक. और उसके बाद उसका प्रिंसिपल देंगे. प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल इज दैट द components of mixture, ठीक है, the components of mixture, they separate out on the basis of relative solubility in the given solvent. ठीक है, फिर आप कहेंगे in the given solvent. Then next line you will say that we will prepare the chromatogram as given in the diagram. ठीक है, हम chromatogram बनाएंगे. We will prepare the chromatogram as shown in the diagram. अगर आप RF वैल्यू की बात कर रहे हैं तो आप बताइए कि डिफरेंट स्पॉट्स RF वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड which will be matched with the actual RF value in the data booklet for the solvent water. So whichever will be having a matching value, we will be identifying that this is the component which is present. Or you can do it by aligning with the pure samples जिसके भी level same है वो आपका substance है. ठीक है, is it clear? So this is how you will be answering the 3 to 4 mark questions here. Got it? तो ये हो गया. Now what will happen in this question is, we can see this apparatus. This question is related to simple distillation. ये सिंपल डिस्टिलेशन का सेटअप है. ये सिंपल डिस्टिलेशन का सेटअप इसलिए क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं है. द सी वाटर कंटेन अ वैरायटी ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स. The diagram shows a simple distillation apparatus setup that can be used to produce a purified water from the sea water. तो आपका जिसका भी boiling point कम है, अगर आपके पास salt water है तो definitely salt का boiling point high होगा, water का कम होगा. तो पहले आपका water purify होके यहाँ आ जाएगा और बाकी आपका जो remaining minerals होंगे they will be left here. The remaining
minerals or remaining salts, they will be left out here, and water you will be having here. So this is a setup. Now they're asking, explain how the distillation purifies seawater. तो सबसे पहले तो आप criteria of simple distillation लिखेंगे, principle of simple distillation लिखेंगे. आप क्या लिखेंगे? criteria क्या है? The components of the mixture whose boiling points are close, or where you need to separate out the solvent from a solution, we perform simple distillation. ठीक है. उसके बाद क्या कहेंगे कि जिसका boiling point low है, the substance or the component whose boiling point is low, here we have the water whose boiling point will be lower than the salts, that will be, क्या process है, that will be boiled. ठीक है. वो boil होगा, वो evaporate होगा, वो condense होगा. ठीक है, in the condenser, and that is going to, this is how we will be getting on the basis of the difference of the boiling point. So this is again the 3 mark. This may 1 mark is for the criteria, and approximately 2 marks is for the process which you explain. The process के अंदर आपके ये 3 छोटे steps है, इनको explain करते हुए आप बताएंगे कि difference in the boiling point, you will be able to separate the two. ठीक है, is it clear? I hope I'm clear.